Okay, so we will be doing two things today. One is we try to understand what is something called as Docker, okay, and then we try to learn how will we connect our API, which we have created, with an actual database. Okay, so far I think what we have been doing was we were using something called as in-memory database. This is what we were doing, but we don't want to rely on this because this is something which is can supposed to be used only during the development, not during the actual when we actually create an API. It is supposed to be talking to an actual database server hosted somewhere from where API should be able to connect and transact data and read data and insert data. So far we were using this part. This is the model which we are using, but not anymore because now we will be replacing this H2 with an actual database. All right. So when it comes to the actual database, there are various types of database which we can use, right? So there are n number of databases. I think the most common you may have heard about is called as MySQL. Okay, MySQL is just one type of database, but we will not be using it. We will be using some a different database which is called as Postgres. So हम ये Postgres DB यूज करेंगे, हम MySQL यूज नहीं करेंगे. We will be using the Postgres DB. Okay, now let me get another one. So again, just to summarize, this will be our API. This is the API which we created, right? ये एम्प्लॉय सर्विस जो हमने क्रिएट की थी वो API है. इसको अभी तक हम H2 database से कनेक्ट कर रहे थे. H2 database was a database which came with the Spring Boot itself. It is also called as in-memory database. But हम moving forward we will not be using it because ये केवल डेवलपमेंट फेज में यूज होता है, बट हमें इवेंचुअली हमारे एपीआई को कनेक्ट करना है एक्चुअल डेटाबेस के साथ. इसलिए वी विल यूज समथिंग कॉल्ड एज Postgres database. So we will create a Postgres SQL. So instead of this, we will be using this one. Okay. Well, now ये Postgres database कनेक्ट करने के लिए हमारे पास Postgres database होना चाहिए, राइट? H2 database तो अवेलेबल था बिकॉज वो हमारे सर्विस के साथ ही आ गया था. जैसे मैं सर्विस, इफ यू रिमेंबर, आई विल शो यू आल्सो, हमारे सर्विस की जो pom.xml फाइल है वहां पर एक एंट्री है, डिपेंडेंसी की एंट्री, एंड दैट इज कॉल्ड एज H2 database. Scope is runtime. That I'll show you later. You can also see in your machine if you have done it, that API. वहाँ एक pom.xml फाइल खोलोगे तो उसमें आपको एक H2 database की एंट्री दिखेगी. It means वो database already in memory database है और it is available during when you invoke your API. बस Postgres के साथ ऐसा नहीं है. Postgres आपको पहले से एक सर्वर होना चाहिए जहाँ पे Postgres इंस्टॉल होना चाहिए और वहां से आप उसको एक्सेस कर सको, उसमें इंसर्ट और फेच, all these operations you should be able to perform. So what we'll do is, this will be our API. We will have to install a server on our machine. अभी हम किसी सर्वर या एक्सटर्नल सर्वर की बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम अपने लोकल मशीन की बात कर रहे हैं. ओके, मेरा बेसिकली एक मेरा मशीन है, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज माय मैक और योर विंडोज. On this you have your API which runs. This is your API which runs here, and on top of it we will also install our database. Okay, and then we will create a connection between two. So first of all we need to install it. So that's the part I am trying to highlight, installation. We have to install this database on our machine. Now there are multiple ways of doing this. Okay, मैं अपने इंटरनेट पे जाऊंगा, वहां पे I can go and I can download this Postgres database as a exe file, double click on it, it will do all the things and it will install it. So आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, and that is the easiest way of handling it, easiest way of installing it. You install it and then you do something in your API, which we will also see in a while, which you will do something in your API so that it could be connected. So connection कैसे करना है we will see. So this part we will see, but first I am trying to focus on this installation part. Okay,
So there are two ways of doing this. One is, as I said, आप Postgres की साइट पे जाके वहाँ का DB install करोगे, it will be installed on a machine. The way you do, the way you install other softwares, the same way this can also be installed. But this is not how we will do it. हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. We will try to go with the method 2 of this installation or making this Postgres database available on our machines, and that method is called as Docker method. So we will use something called as Docker image for this database, and then we will run that Docker image on our machine, and that's how we make this Postgres database available on our machines. When we don't want it, we just delete it, we just stop the container, and then when we want it, we will invoke the container. Okay. Now these, if you have never heard of this term, this is what I'm going to talk about today. So I will give you some background of what Docker is, because this concept is we will use everywhere. Even हमारा जो API है, इसको भी हम dockerize करेंगे. The term is called as dockerization or containerization. हम हमारी API को भी containerize करेंगे. What this all mean is what I'm going to explain next. So today we're going to talk about Docker. We're going to talk about database. Then we'll talk about how we will use database Docker image to install our database on our machines. And then at last, during the end part of the session, we will talk about how we integrate this, how we connect our API with the Docker image or Docker based database, Postgres database. Okay. Let me talk about Docker now. Okay. Let me change the color of this. Black. Okay. So I'll just talk about the concept of Docker. Docker क्या चीज होती है और उसको हम use कैसे करते हैं. Okay. I'll not go into much details because it will be a bit confusing, and I really want you guys to go through it first. And then we anyway will be going through another session on Docker later, क्योंकि हमें हमारी API को भी dockerize करना है later on. अभी हम केवल ये सीख रहे हैं कि Docker का concept क्या है और हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, और उसका यूसेज मैं आज आपको दिखाऊंगा PostgreSDB के साथ. ओके, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. द आइडिया इज आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, इट कैन बी एनी सॉफ्टवेयर. ये आपका एपीआई हो सकता है, ये आपका डेटाबेस हो सकता है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है. जब डेवलपर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन बनाना होता है. राइट. तो फॉर एग्जांपल, इफ आपको क्रोम डाउनलोड करना है, आपको क्रोम अपनी मशीन पे चाहिए, सो देयर इज अ टीम हु डेवलप्ड क्रोम, इजंट इट. गूगल की कोई टीम होगी, उन्होंने उन्होंने क्रोम डेवलप किया. तो क्रोम जब डेवलप किया तो ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव रिटन सम कोड. क्रोम के पीछे, क्रोम एज अ सॉफ्टवेयर is also written in some sort of language of some code or something, right? अब वो कोड को उन्होंने कन्वर्ट किया एक exe फाइल में, राइट? और वो exe फाइल उन्होंने पेस्ट कर दी इंटरनेट पे, from where you went and downloaded it and installed on your machine. This is how we know, right? This is how all software जो हमारे होते हैं, Microsoft Office, ये सारी चीजें इस तरह से ही बेसिकली आप इंस्टॉल करते हो अपने मशीन पे. So ये जो पार्ट है, which is this exe, this is called as distributed or distributed version और distribution, और इसको पैकेज भी कह देते हैं, राइट? सो ये सॉफ्टवेयर जो अभी कोड फॉर्म में है, ये सॉफ्टवेयर अगर मुझे किसी को देना है so that it works on his machine, I need to convert it into a package, or I need to build it and convert it into a package, a distributable package. Let me put it like this. Distributable package. So I need to find a distributable version of it, right? So there are different ways of doing it. Mostly जो आप देखते हो exe files, अगर यही चीज सेम चीज अगर जावा में लिखी हुई है, तो जब मैं इसको कंपाइल करता हूं, दैट आल्सो आई विल शो यू. जब आप इसको रन करते हो अपने सॉफ्टवेयर को, तो रन ऐसे नहीं हो जाता. पहले ये कन्वर्ट होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेबल वर्जन में, जिसे कहते हैं .jar फाइल.
That becomes my distributable version. फिर ये .jar file I can provide it to anyone who want to use it. Okay, whoever wants to use it on his machine or her machine, that's how they use it. The typical example of this model is your Spring framework. जो आपका Spring framework है, right? If you see your Spring Boot framework, वो आप कैसे यूज करते हो? Spring Boot framework के जो डेवलपर हैं, उन्होंने Spring Boot framework को डेवलप किया जावा में, फिर उन्होंने उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटेबल जार बना दी, राइट? देन डिस्ट्रीब्यूटेबल जार उन्होंने प्लेस किया कहां पर? ऑन अ मेवन सर्वर, ऑन अ मेवन रेपो, राइट? अब नाउ whoever needs this, फॉर एग्जांपल वी, हम लोग स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं. हम यूज कैसे करते हैं? हमारे पास सिस्टम है, हम यहाँ पे ये दिस इज अस, वी हैव अ मेवन प्रोजेक्ट हियर एंड हियर वी हैव अ पॉम फाइल, pom.xml फाइल, एंड उसमें हम लिखते हैं कि मुझे ये वर्जन ऑफ स्प्रिंग बूट वगैरह वगैरह ये वर्जन चाहिए. इफ यू सी, आपके उसमें आप pom.xml खोलोगे तो आपको डिपेंडेंसीज वगैरह दिखेगा, एंड वहां उस डिपेंडेंसीज में आप जब लिखते हो तो मेवन गोज हियर and bring it in your machine. So that is how Spring Boot distributes its software. So end of the day जो भी reusable software है या library है, या तो library होगी या फिर working software होगा. So whatever it is, either it's a library or it's a software, it has to be placed somewhere in a distributable format or a packaged format from where the clients, people like us, can download it and make use of it. Okay, so that's the idea behind distribution. Okay, now let's go to the next level, the next explanation about this. Traditionally ऐसा होता है, traditionally this is how you distribute your software. You have a jar, you want to distribute it to someone, you have software written in any language, you want to distribute it, you will package it in the specified format of it and then you give it to someone. But then there was a need of a special way of doing it. Why that need arose is, I do not want to go into detail of it कि हम लोग क्यों करने लगे. Maybe on the fly I will try to explain it. I will try to have another session about Docker later where I will explain this in more detail. But the idea is, when I give this jar to someone, I just give this on the internet and they have to run this jar directly. Now this jar needs something called as JVM, Java Virtual Machine. मतलब जब भी जार किसी ने बनाई तो उसने JDK को यूज किया और उसने जार डेवलप किया. जब ये उसने किसी को दिया, now this has come to my machine, right? Now in order to run this jar on my machine, I also need to install a JVM. Okay, अगर मैं JVM मेरे मशीन पे नहीं है या मेरे मशीन में जावा नहीं है तो I cannot run this jar file. This is problem number one, right? If I don't have this, I cannot run it. I can't run it if I don't have JVM. So that means I have this dependency of having a JVM. ठीक है? Now let's say मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ी, वो थी let's say .NET में लिखी हुई DLL फाइल या .exe फाइल. When someone gave me that exe file, जब मैं अपने सिस्टम पे उसको लेके आया, then I also need to have a Windows based OS. अदरवाइज मैं रन नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है जो exe में मुझे मिल रहा है, अब मैं तो मैक यूज करता हूँ, राइट? नो आई कैन नॉट यूज इट बिकॉज वो तो exe है, मेरे मशीन में exe फाइल्स नहीं चलती, राइट? सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो गया. आई कैन नॉट रन दिस, इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी आई हैव. Okay, so this is one of the many reasons why this new thing called as Docker came into being. Okay, कोई भी नई चीज आती है उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए. वो कोई भी नया सॉफ्टवेयर, कोई भी नई चीज आती है, वो हमेशा आती है टू सॉल्व एन प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. So this is one of the pre-existing problem with the traditional way of distributing your packages. Okay, for example, if आप ये कर रहे हो, problem number one, this is also problem number one. It is also, if someone is sending a specific file to you, you also need to have the runtime of it. नहीं तो वो चलेगी नहीं फाइल. Okay. Another problem is जो मोस्टली डेवलपर्स के साथ होती है. एक डेवलपर ने यहाँ पे लिखा कोड, the code he has written here,
and now he is saying this code is working on my machine, because उसने उस कोड को अपनी मशीन पे लिखा और उसने अपनी मशीन पे चलाया, एक चलने लगा. फिर दिस इज अनदर डेवलपर हियर और अनदर पर्सन. When he tried to run it, इसने कहा ठीक है अपना exe दे दो मुझे और अपना फाइल दे दो. उसने अपना फाइल यहाँ दे दिया. When he tried to run his jar or exe here, he was not able to do it. He said नहीं चल रही यार तुम्हारी jar. So this guy will say नहीं मेरे पे तो चल रही है. This guy will say नहीं मेरे पे नहीं चल रही है. अब कोड तो सेम है, तो ऐसा क्या हो रहा होगा दोनों मशीन में जिसकी वजह से वो फाइल एग्जैक्टली सेम पैकेज वन मशीन पे चल रहा है, अदर मशीन पे नहीं चल रहा है, राइट? दिस इज ऑल्सो अ बिग टाइम प्रॉब्लम विच यूज टू हैपन. डेवलपर अपना कोड रन करते थे, कहते थे चल रहा है, फिर वो डिप्लॉयमेंट टीम को दे देते थे. डिप्लॉयमेंट टीम एक सेट ऑफ डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं सर्वर्स पे. जब वो सर्वर पे डिप्लॉय करते तो चलता नहीं था. सो दे यूज्ड टू कंप्लेन टू डेवलपर्स, भाई तुम्हारा कोड नहीं चल रहा. डेवलपर सेड आई डोंट नो व्हाई नहीं चल रहा, मेरे पे तो चलता है, राइट? द पोटेंशियल रीजन बिहाइंड दिस और पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस कि डेवलपर का जो मशीन है, हो सकता है उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो, उसका जो मशीन में कुछ ओएस है, राइट? मशीन कैसे होती है? मशीन होती है, मशीन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एक मशीन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, फॉर एग्जांपल जावा, जेवीएम और सुपर कोड लिखते हो, राइट? हो सकता है जो दूसरा डेवलपर है उसकी मशीन में कुछ और कॉन्फ़िगरेशन हो, इस ओएस के कुछ और कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, यहाँ कुछ और कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं. So there can be many reasons because of which a code which is working on one machine doesn't work on other machine. Right? There can be many reasons behind it. Now this all was also a problem too. So I have discussed two problems. Problem one, problem two. Problem one is जहाँ पे आपके पास multiple different technology की jar और exes और war and all these things हैं, but जब दूसरा बंदा उसको रन करना चाहता है तो उसको भी वही सेटअप चाहिए. You also need to have the same sort of set of tools and operating system in order to run it, right? Problem two, this problem two has a name. It's called as works on my machine syndrome. Works on my machine syndrome. ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, इवन अभी भी होती है ये बहुत जगह, बहुत इवन इन वेयर आई वर्क इट आल्सो हैपेंस देयर. एक बंदा डेवलप करके बोलता है मेरे पे चल रहा है, दूसरा कहता है नहीं चल रहा, right? How will we avoid these situations? What can we do to avoid this? The answer to this is actually Docker. So मैं ये पूरी कहानी क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं बता पाऊँ आपको कि कर क्यों रहे हैं. हमेशा before we do something, sometimes it makes sense to know why we are doing this. What was the reason behind कि हम एक चीज कर रहे थे तो हम क्यों exactly इस चीज को कर रहे हैं, क्यों इस चीज को सीख रहे हैं, right? So answer to our problem one and problem two is Dockerization or Docker or containerization. Now containerization में करते क्या है? So let me just draw the same thing again. This is your jar. ये दिया डेवलपर को, यहाँ पे भी jar मिला इस बंदे को. The two guys here, right? This was the problem because इस बंदे को भी अभी JVM होना चाहिए, नहीं है तो रन नहीं कर पाएगा. Okay? अब this will convert to Docker how? अब ये बंदा जब वो Docker से करेगा तो कैसे करेगा? When he will do it with Docker, what he will do is he will create a image. This is called as Docker image. ये वैसी image नहीं है जो आपको पता है, जैसे कि वो पिक्चर वाली इमेज, विजुअल इमेज, फोटो नहीं है यहाँ. इसको the name we call it as Docker image, but it is not a pictorial image. So don't get confused with that. The first time learner of Docker image sometimes confuses it. It's not image, huh? It's just it's the name which is given to it. Docker image is nothing but a snapshot of the state of the operating system and its dependencies and its real underlying functionality of the software. It's a collection or it's a composition of all these three things, that is operating system, dependencies, and the real software. Okay. In this case, what we will have in this Docker image, there will be an operating system. इस डॉकर इमेज के अंदर ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उसका रन टाइम होगा और उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा.
ओके, एंड इंस्टेड ऑफ, अब सॉफ्टवेयर कौन सा है इसके अंदर, जार। सो पहले जो मैं केवल जार इस बंदे को दे रहा था, राइट, अब मैं इसको जार नहीं दे रहा हूं। नाउ आई एम गिविंग हिम द होल थिंग, आई एम गिविंग हिम एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर अंदर उसका एक रन टाइम, और उसके अंदर एक्चुअल सॉफ्टवेयर जार। So when I give this to this person can then will not have to worry anything about कि मैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाऊं, मैं उसका रन टाइम इंस्टॉल करूं, फिर मैं सॉफ्टवेयर चलाऊं, राइट। सो इस केस में पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं, रन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड फिर सॉफ्टवेयर चलेगा। इस केस में उसको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एंड सॉफ्टवेयर तीनों इस डॉकर इमेज के अंदर है। All three are part of the Docker image. And that is the beauty of it. That is how it solves problem number one. And that's how it solves problem number two. What was the problem number two? Problem number two was कि मेरे मशीन में चलता है, तुम्हारे में नहीं चलता। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि डेवलपर वन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, it may have some set of configurations because of which it was working on developer one's machine, but maybe on developers two machine or developers two operating system, those configurations were missing. So that was problem two. But here we have no problem, because when it was given to this developer, this image will have an operating system with the pre-existing configuration. So जो configuration यहाँ थी वही यहाँ होगी, रन टाइम जो यहाँ था वो यहाँ होगा, और जार जो यहाँ था वो यहाँ होगा। तो अगर ये डॉकर इमेज डेवलपर वन की मशीन पे चल रही है, तो ये मशीन डेवलपर टू के मशीन पर भी चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स द सेम सेटअप। ओके, सो दिस टाइम, अब पहले यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो जार के फॉर्म में करते थे, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉकर इमेज के फॉर्म में। सो जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसको आप डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर देते हो। That software will be converted to a Docker image, and then you send that Docker image to anyone who needs it. In this case, this person needs this Docker image, so he will go and pull it from a specific place. Once it's pulled, then he will have everything, and then all he has to do is to run some Docker commands to run this software without having to worry about any runtime, operating system, or software. So understand, again, just to repeat myself, I'm repeating myself. For running a software, you need to set up three things. किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर रहे हो, यूजुअली आपको वरी नहीं करना पड़ता है। जो लैपटॉप आप लेते हो, मैं मैक ओएस पे रन करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर को आप रन करते हो विंडोज पे फॉर एग्जांपल, देन आपको उसका रन टाइम इंस्टॉल करना होता है। रन टाइम हमारे केस में अगर जावा का सॉफ्टवेयर है तो हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे या जेवीएम इंस्टॉल करेंगे, और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जहां वो रन होगा, राइट। सो वी हैव 1 2 3। पिछले केस में जहां प्रॉब्लम थी वहां पे 1 2 और 3 की सेटिंग्स खुद करनी पड़ती थी, बट इन द केस ऑफ डॉकर इट कम्स विद इन द इमेज, सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट कि अंदर क्या है। अगर वो चीज यहां रन हो रही है तो वो चीज यहां पे भी रन होगी एज इट इज। सो दिस सॉल्व्स वर्क्स ऑन माय मशीन सिंड्रोम। Okay, and this also solves problem one, and it also solves many problems which we haven't even discussed. We only have discussed so far problem one and problem two. There are many problems which was there earlier with previous models, and Docker solves most of them. Okay, now अच्छा, any questions so far? बहुत ज्यादा आई नो, एकदम से हो सकता है दिमाग में नहीं जा रहा हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि दिमाग में ना जा रहा हो। स्टिल इज फाइन। ओके, यू विल हैव टू गो एंड रीड अबाउट इट। मेरे बोलने अकेले से नहीं होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑफ इट, बट यू हैव टू गो बैक एंड रियली read about it, how it works, and I will give you some links. There's a very good Docker curriculum link. उसमें पूरा Docker का details है, why, how, and etc etc. I'll send you that so that you can read about it. Okay, now let me move to the next thing. This is the last whiteboard, and then I will go to the code.
Now how this actually works, okay? But Docker image भी अपने आप रन नहीं होता है, okay? Docker also needs something called as Docker runtime because Docker is also a software. हर एक चीज एक सॉफ्टवेयर ही होती है सिस्टम में, कंप्यूटर में, whatever you do, anything you do in the digital world, it's end of the day, it's software, right? So Docker is also a software. So how this helps is you have developer 1, developer 2, they have to install something. It's called as Docker runtime. He also has to install Docker runtime. Previously इन लोगों को उस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक रन टाइम इंस्टॉल करने होते थे, बट नाउ डॉकर हैज यूनिफाइड इट. डॉकर सेट कि आप सारे चीज इंस्टॉल मत करो, आप केवल मेरा डॉकर रन टाइम इंस्टॉल करो. यू जस्ट इंस्टॉल डॉकर रन टाइम. माई राइटिंग इज रियल बैड, लेट मी प्रॉपरली राइट इट. रन टाइम. रन टाइम मीन्स एनीथिंग, जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हो उसका एक रन टाइम होता है. रन टाइम इज समथिंग विच रन्स दैट सॉफ्टवेयर, राइट? सो डॉकर का भी रन टाइम होता है. जावा का रन टाइम लेट जस्ट से जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे जावा का कोड रन होता है. ऐसे ही हर एक सॉफ्टवेयर का रन टाइम होता है. एंड इन द केस ऑफ डॉकर ऑल्सो हैज अ रन टाइम. रन टाइम मीन्स समथिंग विच रन्स दैट स्पेसिफिक पीस ऑफ थिंग, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. एंड देन जब वो डॉकर इमेज डेवलप होती है, एंड व्हेन दिस डॉकर इमेज इज गिवन टू दिस गाय हियर, he will run it here on the Docker runtime. So there are two concepts here. One is image and second thing is container. So image and container जब डेवलप हो जाती है और उस सॉफ्टवेयर का को डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड एज इमेज. जब वो इमेज को मैं रन करता हूं, then it becomes a container. This is the difference between image and a container. Let me just show you the workflow of it, okay? I am a developer. Let's just say मेरा जो अभी API, हम जो employee service की API बना रहे हैं, let's take this example. So this is a software I created. Once it's done, I will create a jar file for it because Spring Boot की jar file बनेगी. उस jar file को मैं एक Docker image के अंदर रख दूंगा, राइट? क्रिएट इमेज, इसको मैं बिल्ड करूंगा, बिल्ड डॉकर इमेज, बिल्ड डॉकर इमेज. वंस डॉकर इमेज इज बिल्ड, आई विल प्लेस इट ओवर इंटरनेट at repository. I'll place it under repository. It's generally called as Docker Hub, which I will show you later. मैं Docker Hub में इसको place कर दूंगा. Once I have placed in Docker Hub, then this is available to anyone to download. So this guy, let's say this second person, this person 1, person 2, this person wants it. So he will go and download it on his machine. Once it's downloaded, the Docker image, sorry, this is your image, will be downloaded on his local machine. Then this person will say, run this image. When the command of running an image is given, then on his machine, the container gets created. This is the container. So image gets converted to a container at runtime. कंटेनर जब रन होने लगेगा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर रन होने लगेगा. जो आपका स्वैगर जो आपको दिखता है ना, स्वैगर लिंक दिखता है जहां से मैं ऑपरेशंस करता हूं, गेट, पोर्ट, पुश, डिलीट, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. देयर विल बी एंड पॉइंट, सर्वर नेम, पोर्ट नंबर, एंड ऑन दैट it will be able to, this guy will be able to use that software and hit this and get the response back. जब उसको चाहिए नहीं है, it will say destroy container. When this container is destroyed, only the container is destroyed. Image is still there on his local machine because image is static, container is dynamic. Okay, so this image, the concept of image is static. That means वो बस एक image है. जब उसको आप रन करते हो तो वो कंटेनर बनता है. Then it is a dynamic actual software. इमेज को रन करोगे तो कंटेनर बनेगा. ओके, सो दिस वाज द होल एंड सोल आइडिया अबाउट डॉकर. क्यों यूज करते हैं डॉकर, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर कंटेनर क्या होता है, क्या वर्क फ्लो होता है, डॉकर के अंदर क्या क्या चीजें होती है. ऑल दैट आई हैव गिवन यू सम समरी, सम जिस्ट ऑफ इट. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सी इट्स एप्लीकेशन. अब हम अभी इमेज क्रिएशन का
काम नहीं करेंगे. So today what we will do is not the image part. We will not work on the image part. How to create image, we will try to see later. Today we will try to be a developer too. That means हम एक ऐसे डेवलपर हैं जिसको कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करना है. अब उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हम लोग कंटेनर और इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और उसको रन करेंगे. ओके, सो जस्ट टू समराइज अगेन, we will go to internet. This is your Docker hub. This is your repository. यहां पर एक इमेज है जिसका नाम है Postgress database. This is an image on the internet. This is me. I will download this image. And I will, once it's downloaded, I will create a container from it. So once I create a container, I will have a database available on my machine. This is what I'm going to show today to tell you how this is done. Okay, तो मुझे इस केस में Postgres database यूज कर डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. मैं Postgres की Docker image यूज करूंगा ताकि मुझे Postgres अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ना करना पड़े. सो Postgres की जो टीम है, Postgres की टीम ने जब Postgres database डेवलप किया तो उन्होंने इसके 2 मेथड्स दिए. वन इज कि ये लो exe डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो. सेकंड इज उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप Docker image यूज करो. You download my Docker image, Postgres DB Docker image, download it and run it as a container on your machine so that all its functionality will be available directly in Docker and you don't have to install it. Fine. Any questions so far? Okay, let me stop share and I will share my machine now. Okay, so this is our API, right? Just to give a summary what we did last time. ये हमारा endpoint है. We have the controller. We have these endpoints: get, put, post, delete. Then in the last sessions, we also wrote the test cases for it. If you remember, these are our test cases which we wrote. Last session, we only wrote one test case, but then I told you I will write more test cases. So I wrote test cases for all of these: get all, get employee by name, delete by employee ID, delete employee by ID, employee does not exist. I wrote some test cases here. And since I wrote these test cases, जो मेरा टेस्ट कवरेज है, इफ यू रिमेंबर, हम लोग जब भी हम रन टेस्ट केस लिख रहे थे तो हमारा टेस्ट कवरेज कैलकुलेट हो रहा था यूजिंग Jacoco plugin. So if I go to pom.xml file, there I have put something called as Jacoco. Now Jacoco is a plugin in Maven which calculates the code coverage. That means कि आपके टेस्ट ने कितनी lines of code cover करी. So if I show you, or let me just run this. I'll just go here. I will say Maven clean install. The moment I say Maven clean install, it will start building my software. But before it completes this build process, it also executes the test cases. And that is what it is currently doing. Okay, so it's saying 7 test case pass. Now if I go back to my index.html, I'll say open in Chrome. Let me bring it here. Here it's saying 37% code coverage. If you remember last time मैंने एक ही test case लिखा था, code coverage I think was just 10%, near 10%. But now since I wrote more test cases, it is 37%. Now let's see what file was covered, how many class files were covered. So actually केवल यहाँ पे दिखा रहा है there is config employee 100% coverage. Then there is a file employee service जहां मैंने mostly focus किया है. मेरा जो mostly focus है employee service के ऊपर है, right? That means this class. मैंने इस class पे ज्यादा focus किया. इस class के methods के unit test लिखे हुए हैं. So there if you see सारे methods मेरे fully covered है except one, edit employee. Okay, I can even go here and here it's saying
यहाँ पर ये लाइन कवर नहीं है, दैट मीन्स मेरे टेस्ट केस सारे कवर कर रहे हैं, सारे मेथड्स की सारी लाइंस कवर कर रहे हैं, केवल ये लाइन कवर नहीं कर रहे, this one. Okay, for this I will have to write another test case, but I think I'll not spend time on this today. Let's see, let's do this for next session, because today otherwise we will go out of context, because today we want to understand the Docker thing, right? So we'll not do that, but try to go, but still go to the repository, online repository on GitHub, and see मैंने क्या test case लिखे हुए हैं and how I am writing those test cases, so that you can also write the same. Okay, and later we see how can we increase our code coverage, जो यहाँ पे अभी केवल 20% और केवल 37% है, how can we improve it further. Okay, now okay, let's jump to the next part, which was the database part. So right now, the thing which I was telling you earlier in pom.xml file, you remember, I was saying H2 database. So H2 database is nothing but in-memory database. So ये automatically, इसको कोई server की जरूरत नहीं होती, Spring Boot automatically spins it in the memory for you to see the results. I can even show you. So if I go and run this, if I run this, my application is running, and then I'll go here, I'll say localhost, this is where it's running, and I will say try out, execute, it's running, and then I will go to application YAML, I'll go to H2 console, this endpoint. So if I go to H2 console like this, this is my database, this is an H2 database. यहाँ पे मेरी टेबल क्रिएट हो गई है, डिटेल्स हैं यहाँ पे, इफ आई जस्ट रन दिस इट शोज मी द टेबल. पर ये जो डेटाबेस आपका है, ये इफ यू नोटिस इट्स रनिंग ऑन द सेम पोर्ट, दैट मीन्स इट्स रनिंग एज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, विच इज नॉट गुड, बिकॉज एप्लीकेशन और डेटाबेस का सेग्रीगेशन होता है, एप्लीकेशन अलग चलती है और डेटाबेस का अलग सर्वर होता है जहाँ पे डेटा परसिस्ट होता है, right? This is not happening here. So we don't you want to use this database, we want to use an actual database, and for using actual database we have chosen Postgres database. Now Postgres के कुछ advantages हैं over MySQL. There, as I said, there are many databases available. Something called as MySQL is a database, Postgres is a database, DocumentDB, MongoDB, there are many databases, right? But we want to, oh, by the way, these databases are used for different purposes. The common purpose which we need for this database, for this application, Postgres is the most suitable one. We don't want to go ahead and try using some different kinds of databases. Postgres is just good enough, and that is what we are going to be using. But we definitely don't want to use H2 database for sure, because this is only used for, as I said, for development purposes. So what we do next? So first of all, अगर मुझे कहीं पे भी डेटाबेस को कनेक्शन करना है, so पहले मुझे डेटाबेस होना चाहिए, right? I need to have a database already present. Only then I can actually do it, right? And for that, what we learned कि हम डेटाबेस को इंस्टॉल नहीं करेंगे. We will not install database on a local machine. Rather, we will use something called as Docker image. So we will use a Docker image. They present inside, present on the Docker Hub URL, and from there we will download it. But there is a whole steps to it. ये ऐसे ही नहीं होगा. अगर आप, if you are new to it, you will not be able to do it just like that. First thing first, you need to install Docker daemon. It's called as Docker runtime. For that, what you have to do is you have to go and search for Docker. You go here and then you do this, called as Docker desktop. So आपको पहले Docker desktop नाम का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, डिफरेंट वर्जन आते हैं इसके. अगर आपका विंडोज है तो विंडोज करो, लिनक्स है लिनक्स करो, मैक है मैक करो. आई हैव मैक वर्जन ऑफ इट. You can do it Windows version of it, right? So once you do that, it will look like this. I'll show you that. जब आपका सॉफ्टवेयर रन होगा तो ऊपर कुछ ऐसा दिखेगा, Docker desktop is running. ओके, आपके विंडोज में एक आइकन भी जब आप इंस्टॉलेशन कर लोगे तो आपका आइकन भी बनेगा एक डॉकर डेस्कटॉप पर. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट, सो व्हेन आई गो एंड डबल क्लिक ऑन इट, आई कैन क्लिक ऑन डैशबोर्ड. मेरे यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, विंडोज में कहीं नीचे दिखता है. यू विल सी दैट समवेयर डाउन.
You click on it, and then you click on open the Docker dashboard, sorry. So this is my Docker dashboard, which looks like this. Okay, here you will see images, and you will see volumes, and you will see containers. Primarily, what I'm interested in is images and containers. Okay, images will list all the images which you have, and containers will list all the containers which are being spinned up from an image. So एक image से, as I said, image से container बनाता हूँ मैं, और container is a runnable thing. Container is something which runs. Okay, image is not something which runs, but the container is something which runs. So now I have containers, I have images, right? Now I'll go back here and I'll open another URL. I will say Docker Hub. Docker Hub is a place जहाँ पे वो सारे image की libraries रखी होती हैं. Okay, you can sign up for it. You can create your Docker account, but it's not mandatory. If you don't want to do it, don't do it. But it's better if you do it. It's better so that you can connect your Docker Hub account with the Docker desktop. Okay, यहाँ पर all the software which you need is present here. Okay, instead of going and showing you multiple things, I will just directly jump to the Postgres DB. So if I say Postgres, something like this, it shows me all the available Postgres databases or the Postgres images which is available. Okay, now there are many images. ये ओपन पोर्टल है, यहाँ पे किसी की भी इमेज हो सकती है, पर ये ऑफिशियल इमेज नहीं है. टू गेट द ऑफिशियल इमेज, कि उस ऑफिशियल इमेज का पाथ क्या है, आई कैन गो, लेट मी गूगल इट. आई विल से Postgres database. It will take me here. This is my Postgres database. अगर आपको डॉकर वाला चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है नहीं ऐसे नहीं करूंगा मैं, then you can actually go and download it and it will install on your machine. Similarly जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो. But I would recommend that you try doing this way, क्योंकि eventually हमें डॉकर ही सीखना है. डॉकर से ही हमारा खुद का सॉफ्टवेयर डॉकर पे ही चलने वाला है. So even it's good that it would be good that you do the Docker version of Postgres, not the exe version of it. Okay, just give me a minute. Okay, now let's see. If I click on download, what happens? Okay, it gives me some options to download. Let's see. Do I see a Docker version of it? Downloads. Okay, BST, Solaris, source code, third party. MacBooks. Okay, let me actually directly find it here. It will take some time to locate this. Postgres, maybe this one. Yeah, this is the official Postgres. I couldn't find it here. It's actually must be somewhere, but I couldn't find it at the moment. But this is the official Postgres Docker official image of Postgres, which is just a simple image which contains the Postgres database. To bring it on my machine, I have to say something called as Docker pull Postgres. Once I say Docker pull Postgres, then I will be able to run it. But हम अभी उस level पे नहीं जाएंगे. We will not go to that level. Rather, we will use something called as Docker Compose. I am going to show you the example of Docker Compose, and using that, I will show you how the database would look like. Okay. So bear with me. I will come here, and I will actually go and I will go here. Okay, and I will go and create, maybe I'll create a separate branch first. Git checkout FNB Postgres. Okay, now I will do what? I will go
Okay, I will go and create a file. That file will be called as docker compose.yaml. So I'm going to be creating a docker compose.yaml, which is similar to what you may have already which you have already seen, not may have, you already seen. This is YAML file. This is how I configure my Spring Boot application. But now I will use similar pattern, a similar extension file, docker compose YAML. मैं इसको नाम दे रहा हूँ docker compose. Docker compose and name suggest I can put some piece snippet of YAML configuration, and then I will explain that. And I will be, this is a file which can be used to invoke multiple containers at the same time. Okay. Right now, what I've shown you in the Postgres, अगर मुझे एक single container चलाना है, so I will simply say docker pull Postgres, then I will say docker run, and then my docker run Postgres will start a container which I can use. But I'm not going to use that way. I'm going to be using some other way of doing it, and I'll explain the reason later why I'm using docker compose and not docker pull. Okay, I'll go back here. Here, let me copy paste the code snippet first. Let me copy this and I will post it here. This is how docker compose file looks like. Let me make it a bit bigger. Let me quickly explain this. So from docker compose file contains the information of the container and the image names and other configurations about it. So if you see, I'm saying version 3.8. This is docker compose version. I'm saying services. That means मैं ये दो services run करना चाहता हूँ. First service is DB service. Second service is PG admin service. The reason मुझे docker compose use करना पड़ रहा है is because I want to run this container also. This container gives me the graphical user interface for this database. अगर मैं केवल docker image use करूंगा of Postgres, तो मुझे command line से उस database से interaction करना पड़ेगा. मुझे visually नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा. लेकिन अगर मैं ऐसा ना करके I will also have one more container, another software, which is also given to me as a container, as an image, and then I will connect this with this. So I will also get a graphical user interface of my database. So that's the reason I'm using docker compose.yaml file here, so that I will have two containers running. Let's try to see what's inside. So database के अंदर मैं कह रहा हूँ मुझे ये container name चाहिए, ऐसा मेरा container name होगा. किस image से बनेगा, तो वो image का नाम मैंने लिखा है Postgres. ये कहाँ से आया? यहाँ से. So this is the image name. That is what I have put here, image name. So when this will be run, वो यहाँ docker hub में जाकर ये image को pull करके लाएगा, right? It is still doing the same thing, but in a different way. And then some settings, environment related settings कि उस Postgres user का Postgres database का username क्या होगा, password क्या होगा, मैंने pre-configure कर दिया है. And then वो किस port पर run होगा, that also I have pre-configured. 5432 port पे run होगा, क्योंकि कोई भी container किसी port पे run होता है. Even आपका जो software है वो भी किसी port पे run होता है, right? It runs on localhost 9000, if you remember. Oops, sorry. It runs on localhost 9000. Here, it's running on this port. So all the services runs on a port, and that port is what you need to mention. Okay, same goes true with PG admin. PG admin is used for what? For connecting with your database. This connects with your database, this one, and shows the graphical way of the database. उसको आप उस database में जो manipulation है वो graphical user interface के through आप कर सकते हो using PG admin container. Okay, now let me run this. So if you notice, let me open this here. Right now अभी कोई भी container run नहीं हो रहा है. There's nothing green here. Everything is grayed out. Let me go back here. I have created a docker compose.yaml file. I'll go to terminal, and here I will say docker compose up. So I'm running this command called as docker compose up. The moment I do this, it will do this. And this command will only run when you have Docker Desktop installed on your machine. It will not run before that. Okay, so I have these two containers up and running. Okay, now what we do next is I will go to this port 5050. पहले मैं इसका UI देखना चाहता हूँ, right? So I'll go back here. I will say local host, and I will say, sorry,
5050. I will get this. Okay, कहां से आ रहा है ये? This is coming because I have invoked this container. कहां पे ये container? Here. So if you see, जैसे मैंने रन किया ये ग्रीन हो गया. इस सर्विस के अंदर दो डॉकर कंपोज के अंदर दो कंटेनर थे, पीजी कंटेनर, पीजी एडमिन 4 container. There are 2 containers. Okay, I can also click here, open in browser, and it opens the same thing, which जो मैंने पहले यहां से खोली थी. Okay, so I have 2 containers. This is currently not connected to this, but मुझे इसको connect करना है, जो कि मैं इसके अंदर करूंगा. So I have pg admin container and I have the actual Postgres container. So this is the admin graphical user interface, and this one is the actual database. Let's go here. Now I have to log in here first. इसका username password मैंने पहले से यहाँ configure किया हुआ है, which is admin and root. So I will say admin and root. Click on login. It shows me this. Okay, see, just to compare, ये S2 database था, right? ये जो मैं पहले था, जो मैं use कर रहा था, this is what I was using earlier, isn't it? Now I don't want to use this database. I want to use a separate database. To use separate database, I am using Postgres DB. Postgres DB का खुद का user interface है नहीं. S2 database का तो था, तो मैं directly उसको ऐसे use कर रहा था. Postgres database का खुद का user interface है नहीं. So that's the reason मुझे यहाँ पे 2 container run करने पड़े. One container is this one, जो actual database है, जिसका कोई graphical interface नहीं है. ये Postgres database है मेरा actual database, जो store करता है information and tables. And ये एक additional container जो मैंने इसके साथ में trigger किया है, which can be connected with this database. इसके database से connect कर लेगा, और connect करके उसके सारे operations हैं, जो create, insert, query वाले सारे operations हैं, I can directly do it from here, ताकि मुझे command line से ना करना पड़े. That's the reason मैंने ये container invoke किया है. And this container का interface जो है वो है ये. I've just tried to summarize कि मैं क्या कर रहा हूँ. Okay. Right now, if you see, there are no servers. यहाँ कोई server नहीं है. There's no server available here. But I need to add a server, isn't it? वो server कौन सा है? वो server है ये. So I want to add my database here. How we do it? You do right click, you click on register, or you click on server. Then you give a name here. I'll say my Postgres server. Then you click on connection. Here it is asking for host. मेरा host क्या है? My host is the container name. PG container is my host. So I click on PG container. Port is, you know it, port is 5432. Why? Because यहाँ लिखा हुआ है 5432. Username and password is root and root. So I will go back here and I will say username password. Username is root. Kerberos authentication as it is रहने दो, touch मत करना, root. Okay, save password कर देता हूँ भले. Click on save. So now I have Postgres server added here. Ignore this one. ये मैंने पहले से कुछ I did something, that's the reason it's coming here. But I have just created this server, which is this one, Postgres server. Okay. Inside this, I have a database. I have employee database. I have Postgres, and I have TestDB. Why this is coming from? This is coming from where? This is coming because I have already added this employee DB before. I've already added this earlier, and that's the reason it is actually showing up here. So I have employee DB added. In your case, if you are doing it for the first time, automatically ये चीज नहीं आएगी आपके पास database के अंदर. Okay, मुझे आ रही है because मैंने इसको पहले create किया हुआ है. That's the reason I'm seeing this. Okay. I'm also able to see the tables. I'm going here employee, and in the employee this is a table I have which I have already created. ये भी automatically आपको नहीं आएगी, आपको actually create करना पड़ेगा. Okay, I've actually created this. How did I created this? I actually went to let me show you a small query which I'll show you later. I have actually placed this in the repository directly. Let me show that quickly. This is the query. So if I show that here, this is the query I need to run to create my table. ये आपको SQL की query है, which I have actually executed to make this happen,
to add my database or create my table there. So मैंने यहाँ पे केवल अभी connection किया था. I've done a connection, and inside that connection I have to create a database, employee database, and then I have to create a table. So I have to go to tables and create a table, and then employee database will be created for you. So the two ways of doing it, मैनुअली करो या फिर आप उसको क्वेरी रन करो क्रिएट टेबल की. तो टेबल की क्वेरी क्रिएट रन करोगे एंड देन यू विल हैव टू मेंशन द कॉलम नेम्स, कॉलम के टाइप्स, एंड देन इट्स ऑल डन. फाइन. once this is created, then you have to connect it. now आपको देखना है कि मैं इसको कनेक्ट कैसे करूंगा, बिकॉज आपका जो सारा डेटा है वो तो अभी डेटाबेस H2 डेटाबेस में जा रहा है. क्यों जा रहा है? बिकॉज इफ यू गो टू application.yaml, if you go here, you will notice that the configuration of your H2 database and JPA is being done here. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ JPA H2 dialect, that means go to H2 dialect, and then the data source I am saying URL JDBC H2 memory mydb. This is what I'm saying here, and that's the reason everything is going inside the H2 database, and I want to change it. So what I will do is I will put some more configuration. Let me show you that. So I will go back to my YAML file, and instead of H2 database, instead of doing this, I will do this. तो वही सेटिंग्स हैं, डेटा सोर्स सेटिंग, JPA सेटिंग, यहाँ पे भी JPA सेटिंग, but this time I have replaced it with different value. So now I'm saying Postgres SQL dialect. यहाँ मैं कह रहा था H2 dialect. I'm saying now Postgres SQL dialect, and then here I'm saying the database source, the data source of it. Okay, I'm saying JDBC Postgres localhost 5432, which is this one, जो मैंने अभी invoke किया है. I'm running this in 5432, and then I'm saying here the database name is employee database, which is this one, employee database. Okay, employee database. Fine. एंड यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला, ये वही यूजर नेम पासवर्ड है, कहाँ से आया, जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, बिकॉज टू कनेक्ट दिस इट विल हैव टू कनेक्ट विद द डेटाबेस पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ इट. सो आई हैव डन दिस हियर, एंड देन आई विल ट्राई टू रीस्टार्ट इट. सो अब जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा, इट विल स्टार्ट गोइंग टू द, इट विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू द Postgres, not the H2 one. Okay, there is an error. Oh, okay, I think I have made a small mistake. Wait, I think we also have to do one important thing. We also need to add a Postgres SQL in the pom.xml file. So I need to add a dependency here like this. This is my Postgres SQL dependency. Similar to I had H2 database dependency, I have to have Postgres dependency here. Only difference between Postgres and H2 is, H2 के case में H2 database in memory comes with the Spring Boot itself. But Postgres के साथ ऐसा नहीं है. Postgres के साथ मुझे I need to keep a separate database for me, which is this one. I need to connect with it. Okay. Now let me rerun it. Let's see now whether it works. Still failed. Okay, the same error, so it seems. Okay, let's see. Data source, script data initialization defined in class path. Okay, I have to refresh it first. Okay, whenever you modify the pom.xml file, better always remember to refresh it, to reload it. Sometimes otherwise it doesn't refreshes the dependency. Let me do this again. Okay, my application is up and running. Now let's just go and click on here again, and this time let me try to get it. Let me try to get some information, try it out, execute. Okay, you see I'm getting the information. This is coming from my, not coming from here, rather coming from, let me close all this. It's coming from my this database. If I go and open the employee
create a query tool. Let me say select star from employee, and I will run this. Right, so this is what I'm getting here. So if you notice here, it's also coming from there. Now let me try to create it, create a new entity. So if I go and post it, try it out. I don't want to give this one. If I say, let's say Smith or something, and if I go and click on execute, oh, I'm getting 500. Why? Let me go and see. It's saying I'm getting 500. Okay, fine. I got it. So there's one more mistake which we made. We have to go to our model, and here we need to say in the generated value, we have to say strategy is equal to generated type as identity. Okay, this is what we have to say because Postgres expects your ID to be generated because I have written generated, but it has to be a type of identity, and that's the reason I have to say dot identity here. Okay, and if I say and rerun this, okay, and let me try to create it again, execute. This time it worked. If I go back here, click on run, you see Smith has come here. It is not going to H2 database, by the way. So okay, so it's not that it's going and saving it here. It's actually doing or connected to my Postgres database here. Okay, and if I do go back here, if I do the get again, वो Smith value जो है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी. So that means I'm successfully able to connect my Spring Boot API with an actual database, not the H2 database, with an actual database, which is nothing but a Postgres database. Okay, so this is the extent of what I wanted to cover today. Let me quickly summarize what we did. Okay, फर्स्ट थिंग हमने डॉकर के बारे में सीखा कि डॉकर की जरूरत क्यों होती है, डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारे लिए. ठीक है, फिर हमारा जो अल्टीमेट गोल था वो था कि मेरी जो एपीआई है, स्प्रिंग बूट की जो एपीआई है, वो पहले एक इन मेमोरी H2 डेटाबेस यूज करती थी. मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे उसको रिप्लेस करना था एक एक्चुअल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके. राइट, उसके लिए मैंने चूज किया पोस्टग्रेस डेटाबेस को. पर पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मुझे पोस्टग्रेस डेटाबेस पहले इंस्टॉल करना पड़ता. तो मैंने उसको इंस्टॉल ना करके मैंने उसकी एक डॉकर कंपोज नाम की फाइल बनाई और वहां पे मैंने डॉकर कंपोज की फाइल डाल दी. ओके, डॉकर कंपोज के अंदर कोड डाला अबाउट द कंटेनर की मुझे ये कंटेनर की इमेज चाहिए, और मुझे एक और कंटेनर भी रन करना पड़ा विच इज पीजी एडमिन, क्योंकि डॉकर जो पोस्टग्रेस है उसके पास खुद का यूजर इंटरफेस नहीं है. सो मुझे एक खुद के लिए खुद उससे अच्छे से इंटरेक्ट करने के लिए, उसको डेटा को टेबल को विजुलाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे एक पीजी एडमिन नाम का एक और इमेज ट्रिगर करनी पड़ी. एंड देन आई कनेक्टेड दिस इमेज विद द कंटेनर इमेज. दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव डन. एंड देन मैंने अपने स्प्रिंग बूट एपीआई को कनेक्ट किया. इससे कैसे कनेक्ट किया, मुझे 3 थिंग्स करनी पड़ी. पहले तो मैं form.xml में गया, I had to go and add this dependency. Then I had to go to my employee, and in the generated value, I added the strategy generation type as identity. Fine. And third last thing, the most important thing is the configuration of the YAML file. So in the application.yaml file, I have put the Spring and data source and JPA. So in the data source and JPA, I have put something like this. The details of it, data source URL, username, password, and the JPA, I have put the Postgres SQL dialect. And this connected my JPA, also this connected my Spring Boot API to the Postgres database. Okay, fine. This is what we have learned today. This is just in summary what we did.
In the next session my goal is ये जो मेरा API है, जब मैं इसको बिल्ड करता हूं तो ये एक जार क्रिएट करता है, यहाँ पर टारगेट फोल्डर के अंदर एक जार क्रिएट होती है ऐसी। अब मुझे भी ये सॉफ्टवेयर किसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल कराना है, मुझे किसी को देना है so that he can run it. So what I will do is I will also dockerize my whole API. So मैं किसी को जार नहीं दूंगा, मैं अपनी API की डॉकर इमेज दूंगा। So अगर आपको आपके मशीन पे मेरी ये API रन करनी है तो आप ये API रन करने के लिए मेरा कोड डाउनलोड नहीं करोगे, मेरी इसकी इमेज डॉकर हब से डाउनलोड करोगे और अपनी मशीन पर रन करोगे। Okay, clear? So this is what we will do next session, and after that we will start creating our actual application, which is the Doctor Everywhere application, where we will create some new APIs. So we'll create patient API, doctor API, and another one called as appointment API. These three APIs is what we will create in the next sessions. Till then, you have to go through these concepts. So I will publish some links. मैं डॉकर के कुछ लिंक्स पब्लिश करूंगा, पोस्टग्रेस के कुछ लिंक्स पब्लिश करूंगा. डू ऑल दिस इंस्टॉलेशन ऑन योर मशीन्स and try to connect your API with the database using Docker Compose file. Okay, any questions? I'm not sure if anyone is in the call even. Anyone still there? Listening? Yes. Oh, you're there. Good, okay. Okay, I know this could be boring. But okay, give it a try, guys. Give it a try. Sir, Spring Boot topic is over. No. No, it's not over. We have to create more APIs, Kavita. अभी तुम्हें स्प्रिंग बूट की अभी 3 नई APIs क्रिएट करनी है। अभी मैंने आपको कल एम्प्लॉय स्प्रिंग बूट API सिखाई है कि कैसे बनाना है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही हम इसी जो अभी हमने किया बिल्कुल इसी तरह से बाकी की जो 3 APIs है वो क्रिएट करेंगे, विच इज पेशेंट API, डॉक्टर API एंड अपॉइंटमेंट API, बिकॉज हम एक सिस्टम बना रहे हैं विच इज अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। तो उसके लिए हमें 3 API चाहिए। ओके ओके। तो उन learning is over na sir, Spring Boot we can we do the practice on more 3 APIs. हाँ राइट, लेकिन जब वो ऑल दूसरी 3 APIs हम बनाएंगे ना, तो उसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे स्प्रिंग बूट। ओके ओके, बिकॉज हमें ऑथेंटिकेशन भी सीखना है, हमें कुछ स्टेटस कोड्स कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना है। सो वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट स्प्रिंग बूट हम वहां पे सीखेंगे। ओके ओके। और डॉकर इसलिए हमको जरूरी है अभी सीखना, क्योंकि अभी हमको इसकी एक समथिंग कॉल्ड एज CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन क्रिएट करनी है। उसके लिए डॉकर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमको डॉकर भी सीखना, क्योंकि सारे हमारे एपीआईज डॉकर से रन होगी। हमारे एपीआईज, हमारा पूरा एप्लीकेशन डॉकराइज एप्लीकेशन होगा, तो इसलिए डॉकर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। So that's why I introduced the Docker concept as well. Yes. Okay, fine. That's all I have. Any questions? No sir. No sir. Okay. Okay. Thank you guys. I will upload. I've sent the links in the group. जो भी मुझे लग रहा है आप लोग को पढ़ना है प्री रीडिंग करने के लिए, pre and post, and then I will also publish the video later. Thanks everyone. Bye. Thank you, sir.